Hello everyone. In this video, we are talking about unit testing and integration testing. So, in this content, we talk about introduction to unit testing, types of unit testing, objective of unit testing, workflow of unit testing techniques, benefits of unit testing, example of unit testing. Introduction to integration testing, types of integration testing, example of integration testing, unit testing versus integration testing. So, first we talk what is unit testing. Unit testing is a software testing technique in which individual units or components of a software application are tested in isolated form the rest of the system. The purpose of unit testing is to verify that each unit of code is functioning correctly as per its design and specification. इसका मतलब ये है कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कार है, अगर हम कार को एक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास इंजन के लिए एक अलग प्रोसेस होगी, ब्रेक के लिए अलग प्रोसेस होगी. तो जब हमारा इंजन रेडी हो जाएगा तो हम हमारे इंजन को अलग टेस्ट करेंगे, ब्रेक को अलग टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं. टाइप्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड. Manual testing. Manual testing is a type of testing where a human tester manually executes test cases to ensure that a software application behaves as intended and meets the requirements. It is often used to test the application user interface, usability, and overall user experience. So basically, manual testing means it is done by man. It means living things which can fulfill their requirements and they check all test cases are fulfilled or not. And second is automated testing. It means there are machines which test our all requirements function which are correctly behave or not in different conditions. So what is the objective of unit testing? To isolate a section of code, to verify the correctness of the code, to test every function and procedure, to fix bugs early in the development cycle and to save costs, to help the developers to understand the code base and enable them to make changes quickly, to help with code reuse. It means अगर हम हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली चेक करेंगे तो उससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, क्योंकि अगर हम जैसे कार ही है तो अगर सारी चीजों को हम इंडिविजुअल लेवल पे चेक कर चुके होंगे तो फिर जब सारे कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये हमें पहले ही पता चल जाएगा. तो इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये हमारा कोड सही है तो हम इसे रीयूज भी कर सकते हैं. So this is the workflow of unit testing. Create test cases, review, baseline, execute test cases. So this is unit testing technique which is in three types: black box testing, white box testing and gray box testing. Black box testing. This testing technique is used in covering the unit tests for input, user interface and output parts. White box testing. This technique is used in testing the functional behavior of the system by giving the inputs and checking the functionality output, including the internal design structure and code of the modules. Gray box testing. This technique is used in executing the relevant test cases, test methods, test function, and analyzing the code performance for the modules. So this is the benefits of unit testing: early detection of defects or bugs, reduced cost of fixing defects, improved code quality, faster development cycle, increased confidence in the correctness of the code, facilitates refactoring of the code. So example of unit testing. If we have a simple calculator application that performs basic arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division, we can perform unit testing on each arithmetic operation by writing test cases for each operation. For instance, we can write test cases to ensure that the addition operation is correctly adding two numbers together, the subtraction operation is correctly subtracting two numbers and so on. So this is also the example unit testing कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है जो हमारे लिए एडिशन का टास्क परफॉर्म कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है और डिवीजन कर सकता है. तो हम वन बाय वन चेक करेंगे कि अगर हम दो नंबर दे रहे हैं तो वो उसका करेक्ट आउटपुट यानी कि उसको ऐड करके दे रहा है या नहीं.
फिर हम सेकेंड टाइम में चेक करेंगे कि वो उन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके दे रहा है या नहीं। फिर हम मल्टीप्लिकेशन का चेक करेंगे, फिर डिवीजन का चेक करेंगे, मतलब यूनिट वाइज उनको चेक करेंगे। So now we are talking about integration testing. Integration testing is the second level of the software testing process, comes after unit testing. In this testing, unit or individual components of the software are tested in a group. The focus of the integration testing level is to expose defects at the time of interaction between integrated components or unit. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है ये सेकेंड लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, जो हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ये जो है ग्रुप ऑफ यूनिट टेस्टिंग को ही हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। जैसे हमने पहले कार का एग्जांपल लिया था कि हमने पहले ब्रेक चेक कर लिया, इंजन चेक कर लिया, तो उसके बाद हम दोनों को साथ में करके देखेंगे कि वो प्रोसेस सही हो रही है या नहीं। So basically integration testing are four types: Big Bang testing, bottom-up integration approach, top-down integration approach, mixed or hybrid integration approach. So first, Big Bang integration testing. It is the simplest integration testing approach where all the modules are combining and verifying the functionality after the completion of individual module testing. This approach only for very small systems. If once an error is found during the integration testing, it is very difficult to localize the errors as the error may potentially belong to any of the modules being integrated. So debugging errors reported during Big Bang integration testing are very expensive to fix. सो बेसिकली ये एक सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच होती है जिसमें हम कंबाइन करते हैं पहले दो यूनिट टेस्टिंग को और फिर उन्हें आपस में टेस्ट करते हैं कि हमें हमारा आउटपुट सही मिल रहा है कि नहीं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं। फिर उसमें हम वन बाय वन करके ऐड करते जाते हैं। Second one is bottom up integration testing. In bottom up in testing, each module at lower levels are tested with higher modules until all modules are tested. The primary purpose of this integration testing is that each subsystem tests the interfaces among various modules making up the subsystem. This integration testing uses test drivers to drive and pass appropriate data to the lower level module. बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है तो हम सबसे पहले जो उसकी लोअर प्रायोरिटी होती है हम पहले उससे टेस्ट करते हैं कि वो हमारे सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, फिर उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर करते करते हम पूरे मॉड्यूल्स को कवर करते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. Top-down integration testing technique is used in order to simulate the behavior of the lower-level modules that are not integrated. In this integration testing, testing takes place from top to bottom. First, high-level modules are tested and then low-level modules, and finally integrating the lower-level module to a high level to ensure the system is working as intended. The top-down integration testing bottom-up का ठीक उल्टा होता है कि इसमें जो भी हमारी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी होती है पहले हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो हमारा सही से वर्क का सारी रिक्वायरमेंट, सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो उससे लेस देन प्रायोरिटी है, फिर उससे लेस करते करते हम एंटायर मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। एंड देन फोर्थ, मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग. A mixed integration testing is also called sandwiched integration testing. A mixed integration testing follows a combination of top-down and bottom-up testing approaches. In top-down approach, testing can start only after the top-level module have been coded and unit tested. In bottom-up approach, testing can start only after the bottom-level module are ready. This sandwich or mixed approach overcomes this shortcoming of the top-down and bottom-up approaches. It is also called the hybrid integration testing. Also, stubs and drivers are used in mixed integration testing. तो मिक्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग को ही हम सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं और हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। बेसिकली ये हमारा टॉप डाउन एंड बॉटम अप का मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यानी कि दोनों लेवल की हम टेस्टिंग करते हैं। So this is the example of integration testing. You can see the figure, and in this first we will log in as a user P to amount transfer and send rupees 200 amount.
The confirmation message should be displayed on the screen as amount transfer successfully. Now log out as P and log in as user Q and go to amount balance page and check for a balance in that account equal to present balance plus received balance. Therefore, the integration test is successful. Also, we check if the amount of balance has reduced by rupees 200 in P user account. Click on the transaction in P and Q the message should be displayed regarding the data and time of the amount transfer. So now we are talking about what is the difference between unit testing and integration testing. In unit testing, a level of software testing where individual units of a software are tested. A level of software testing where individual units are combined and tested as a group in integration testing. इसका मतलब यही है कि हम यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल यूनिट को हम टेस्ट करते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम ग्रुप ऑफ यूनिट टेस्टिंग को टेस्ट करते हैं. Second difference is checks the functionality of modules or unit. And in integration testing checks data transferring among multiple modules or units. Third difference is integration testing is performed by developers. यानी कि जो डेवलपर्स होते हैं वो यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग it is performed by software testers. So that's all about in PPT. Thank you.